also diplomacy, and the border nuances of administration. We also had the privilege of hearing the key ministers, notably Shri Dharmendra Pradhan, the Union Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship, also Shri Nitin Gadkari, the Union Minister of Road, Transport and Highways, Shri Mansukh Mandavia, the Union Minister for Health. Now, we also heard from top policy makers, technocrats, pioneering entrepreneurs, and also filmmakers and corporate captains. So that's not it. Day 2 is all set to be even more grander, and that's something that we're all looking forward to. So ladies and gentlemen, we start today's proceedings with a matter straight from the heart. Now literally, I say that, why is it from the heart? Because one thing is clear. When it is coming to the healthcare system, inaction is not an option. And this is particularly relevant for non-communicable diseases, which is the NCDs, such as the cardiac occurrences or the chronic diseases. Now, NCDs are one of the major challenges for public health in the 21st century. And not only that, it also goes ahead and also relates to human suffering, which is the broader aspect of it. They also cause that kind of suffering, which also harms and inflicts upon certain situations on the socio-economic development of the country. So who better to talk about this than Professor K. Srinath Reddy? He's the former head of the Department of Cardiology at the All India Institute of Medical Sciences in New Delhi, and also the founding president of the Public Health Foundation of India. A winner of the Padma Bhushan Award, he is a member of the Government of India Technical Task Force of COVID-19, and today he will be speaking to us on the issue which is the subject of so many conversations at home and in offices all over the country, which is there really a sudden and sharp increase in the number of heart failures, especially among the younger people? And he'll, of course, be following it up with questions from the audience. So, Dr. Reddy, I'd like to extend a very warm welcome and invite you onto the stage, please. A warm round of applause, guys, for the good doctor. So the talk today is Heart of the Matter. Is there a heart attack pandemic? Over to you, doctor. Heart of the matter. As a former head of the Department of Cardiology at the All India Institute of Medical Sciences, where we had to look after many persons with heart disease, we know that all matters of the heart all affairs of the heart are expensive, and not merely in a poetic sense, because they extract a price in terms of death, disease, disability, and also very high expenses in terms of costly care and treatments. But now there's been a question raised as to whether heart attacks are indeed very much on the rise in India. And we are seeing newspaper reports and television reports very frequently of celebrities dying of heart attacks, quite often after they've been to the gym or in the gym. And these are people who should have been considered otherwise very healthy, and most of them had not really reported any major issue related to their heart health. And therefore, when we suddenly find these kind of reports cascading into the news channels and to the newspaper reports, there is alarm that people are indeed now much more prone to heart attacks. So I've been asked to speak on, is there an epidemic of heart attacks in this country? Well, just to clarify, the epidemic actually has been ongoing. It's been going on for quite some time, even since 1990 or even slightly earlier, but particularly since 1990 to 2020, we have seen a huge increase in the number of heart attacks in people of Indian origin
and particularly in India. So this is a public health emergency in slow motion, but nevertheless, it's a public health emergency. And this is not something that is totally new for people of Indian origin, because around 1959, for the first time, in what was then Malaya, but it was actually Singapore part of Malaya, they had reported that Indians had far greater excess mortality rates, almost six-fold higher, of heart attacks compared to the Chinese, and they were mostly in younger or middle-aged population. And then subsequently, we have seen reports cascading around the world, across the world, from different countries, the United Kingdom, the United States, Canada, Fiji, Malaysia, and also Mauritius and elsewhere too, where Indian migrants, whatever the time or climb of migration, from first generation to the third generation migrants, were all having excess risk of heart attacks and early heart attacks. So the question became fairly clear as to the excess risk, but the next question was, is it genetic or is it because of other reasons? Now, we started doing studies through the Indian Council of Medical Research funded studies in India in early 90s, and we started comparing, firstly, Indians in India with Indians in UK, and also Indians living in urban areas in India and living in rural areas in India to find out what these differences are. We also participated in major international studies like InterHeart, which looked at about 52 populations across 32 countries, and also looked at whether common risk factors explain the risk across populations, or are there specific risk factors particularly to certain ethnic groups. Now, it is very clear that InterHeart showed that there are 9 risk factors which are common globally to all populations, including to Indians. But the levels at which Indians manifest this risk is different. We actually start expressing our risk much more, in a sense, in a severe form, even at relatively lower levels of risk factors, whether it's blood pressure or whether it is LDL cholesterol or total cholesterol or so. So the question became, is it genetic, or is there some other predisposing factor which sort of identifies why these people are at excess risk? And that is getting precipitated by our living habits, which are changing quite rapidly with modernity. So when we looked at it, it was very clear that when you compare Indians living in the UK, for example, with Afro-Caribbeans and white Caucasians living in UK, things like diabetes, fairly high deposition of fat in the abdomen, and either what's called insulin resistance, and certain abnormalities in the fat, like low levels of the protective HDL cholesterol, these and high levels of triglycerides, these appear to be particularly common among Indians. But when we started looking at urban and rural comparisons in India, then it became very clear that the conventional risk factors like high blood pressure and smoking, obesity, and high levels of serum cholesterol, they appear to explain the risk between urban and rural Indians. Indeed, we also did a factory study in which we looked at factory workers in big cities of India who had migrated recently in 5 years or slightly earlier to urban areas and compared them with their siblings who had stayed back in rural areas. And there we found that within 5 years of urban migration, what we can call urban acculturation, every single risk factor went up in those who had come to the cities. Blood pressure, body weight, blood glucose, blood cholesterol, name it and you have it. So it is very clear that instead of blaming the genes we share, we perhaps should be looking at the genes we wear.
Are we still fitting into last year's jeans or not? And one of the things that is very clear now is this abdominal fat, which is deposited much more around the organs of the abdomen, is much more predictive of risk of both diabetes and heart attacks than what is conventionally measured as the body mass index, which is the ratio of weight to height. Because it's been found that people of Indian origin generally manifest risk at what is considered to be normal body mass index, fairly high risk. That is because body mass index only measures height and weight, doesn't explain whether the weight is because of bones, whether because of fat, or because of body fluids. What exactly is it? It doesn't explain very clearly. And muscle, mostly. So, on the other hand, now it is increasingly believed that a simple measure like what we can call waist to height ratio, just measure the waist circumference and the height, and if it is more than 50%, then you are at a high risk of diabetes, heart attacks, and this is a tailor-made measure for us, which we can easily have measured without difficulty. But then the question, of course, is, why is it that persons who appear to be fairly healthy are suddenly having heart attacks? Firstly, let me explain the difference between heart attack and angina. When blood vessels are diseased because of fat deposition, and there are blockages of 70% or more, that affects the flow of the blood. Particularly when you exercise and your body demands more blood and more oxygen, then the blockage actually prevents that extra blood from reaching the heart or reaching the muscles, and the heart actually has to strain much more. That is angina, which you get on effort. That's because of blockages of 70% or more. But heart attacks have a different pathology. You can get a heart attack with even a 30% block with a soft plaque. So if there is a soft plaque, which normally does not cause any problem, even on exercise, but if there is a condition which actually makes the plaque rupture, then the exposed surface of the fibrous fatty core of that plaque then gets exposed to the blood flowing in the blood vessel, and that triggers a huge clot that blocks the blood flow and causes a heart attack. And now, therefore, we have to understand what destabilizes the plaque. We know that sudden rise in blood pressure can do it, a lot of stress can do it, smoking can do it, a very fatty meal can do it, and lack of sleep, which can cause a lot of inflammation in the body. Now, inflammation is the key word, whether it is diabetes, or whether it is bad lipids, whether it's lack of sleep, whether it's stress, all of them ultimately cause inflammation in the body, and they break down the plaque, even if it may be small, but if it's a soft plaque and if it gets broken, then, so no wonder somebody seems to be very healthy, used to exercise, but has had a relatively sleepless night, goes and does vigorous exercise, and suddenly the plaque ruptures because of the extra adrenaline and catecholamines that are flowing in. And it is also very clear, now moderation is the key. We have all been told that a lot of good exercise is wonderful, but recently a lot of data have come in that people who do very vigorous exercise very frequently are at greater risk of atherosclerosis. They have greater risk of cardiac rhythm abnormalities. Similarly, too high in HDL. HDL is supposed to be the protective cholesterol. But anybody who has more than 80 is actually at a higher risk of heart attacks. So better keep it above 45, preferably around 50, but certainly not above 80. Similarly, LDL is supposed to be the bad cholesterol. But people with less than 70 milligrams of LDL cholesterol are now shown in studies to be at a higher risk of heart attacks. So we are now beginning to recognize moderation, and the middle path is probably the best, except for tobacco. No smoking, no tobacco product of any kind, anytime.
Similarly, fruits and vegetables, of course, you can take plenty because they're protective. So these are important lessons that we are learning, that heart attacks occur because of reasons which are slightly different from that of angina. The overall risk factors like diabetes, blood pressure, high cholesterol, high triglycerides, low HDL, all these are common. But whereas angina occurs because of chronic buildup of these fatty plaques, which grow and start blocking the blood supply, heart attacks can happen suddenly when the plaque breaks down, if it is soft, and then triggers a huge clot. So the important thing is that we try and maintain some of these things under control in terms of risk factors. And now, why is it that COVID is also now supposedly causing higher amount of risk? We know that COVID triggers inflammation. As I said, inflammation is the key word. And COVID triggers inflammation throughout the body. COVID triggers blood clots in the veins as well as in the arteries. It can cause large clots supplying blood to the heart. It can also cause what are called microinfarcts in the small blood vessels of the heart. And they can also cause electrical abnormalities and lead to sudden cardiac arrest. So COVID, because of the inflammation, is also triggering heart attacks. And that is something that we ought to be, and it destabilizes plaques. So that is the reason why we have seen an increase in recent years, particularly of what are reported to be COVID-related deaths. And a celebrity who has recently recovered from COVID goes to the gym after a relatively sleepless night of partying and does vigorous exercise, and next day appears in the headlines as a sudden unexplained death at the age of 40 or 45. So that is the problem. Now, one of the things that we must recognize is that heart attacks are indeed occurring at a relatively earlier age in India, but it is also true that they're increasingly occurring among poorer people. Whenever the pandemic of heart attacks starts, any country, or the epidemic of heart attacks starts in any country, it usually starts in the richer sections who have greater access to fatty diets. They have greater access to labor-saving devices like cars, and even tobacco started first in the fashionable smoking rooms of London, but now it is there in every street corner of almost every low and middle income country. So we recognize that over a period of time, those who are rich and educated start understanding why these are occurring and adopt healthier lifestyles. They give up tobacco, they undertake more exercise, and then they also try and take healthier diets, more fruit and vegetables. So whereas now tobacco, ultra-processed foods, all the sachets that you see of ultra-processed foods, they're there in every street corner, and healthy edible oils become less affordable to the poor people compared to unhealthy edible oils. So over a period of time, heart attacks become much more frequent among the poorer sections of the people. But it is absolutely important that we recognize that these transitions are happening and also create environments in which people can lead healthy lives. Now, even if you look at urban environment, pollution is a major challenge. Pollution, again, builds up atherosclerotic plaque in the blood vessels, it raises blood pressure, and it destabilizes plaque. Even a relatively small plaque can rupture again and cause an acute heart attack. Sudden cardiac deaths and sudden heart attacks have been known to people exposed to high levels of pollution. They also trigger arrhythmias. At the same time, our cities are becoming difficult for regular exercise. And for poor people, that's going to be a constraint. We don't have community spaces where people can easily exercise. In fact, previously, people used to be paid for doing physical activity. Now people have to pay for doing physical activity by paying for gym membership. So we need to build healthier cities with less pollution, with opportunity for more pleasurable and safe physical activity, have tobacco-free spaces,
and particularly ensure that our children are growing up healthy, because childhood obesity is becoming a major problem in India. And even obesity, if you're really looking at it, the latest NFHS 5, the National Family Health Survey 5, in adults in India reported that 24% of the adults in India were obese, overweight or obese, even by the conventional standards. Leave aside the waist-height ratio. And 19% in rural areas and 33% in urban areas. And just to give you a figure, when my former colleagues in All India Institute of Medical Sciences, along with people in Chennai, conducted a major diabetes study, but not just diabetes, pre-diabetes, what's called dysglycemia. Other indicators of pre-diabetes also combined with diabetes. In Delhi, among adults above age of 20 years, 72% of men and 73% of women were found to have dysglycemia, or unacceptable glucose levels, diabetes or pre-diabetes. So that is the kind of catastrophe that we're walking into. Plus, of course, in terms of stress-related issues, there is a challenge about increasing stress in modern life. Stress is actually a protective phenomenon to some extent, because we do need a certain amount of stress, particularly when there are emergencies. Acute stress is required. If you're walking on the street and suddenly a DTC bus rushes at you, you can't say, "Ki farak panda," right? So there is a certain amount of stress that saves you. You have to jump up and protect yourself. So stress is protective. But too much of stress, particularly chronic stress, and particularly situations where you have very little control of how to manage the stress, that actually continues to create inflammation, erode the organs of your body, especially blood vessels, and create atherosclerosis as well as rupture soft plaques. So in terms of stress, just remember this. Stress is like a musical string instrument. If your strings are too lax, they don't make good music. If your strings are too taut, they don't make good music. So just the right amount of stress is what is optimal for us. So I think there are a number of ways in which Indians can protect themselves in very many ways. But some of the things that we must recognize is that even when we are talking about blood tests or blood pressure or blood glucose, any of these, we do recognize that most of them operate in a moderate band, neither too low or too high. And it is important for us to maintain that moderation, even in terms of physical exercise, etc. And then we will be able to avoid the heart attacks. But indeed, heart attacks are rising in this country, and they're affecting people across all social classes, in all parts of India. Both genders are affected, and therefore it's absolutely important for us to prevent the heart attacks as well as we can by creating conditions where we can make and maintain healthy living habits, but also following certain simple rules by which we can protect our hearts. Thank you very much. So any questions? I'll be happy to take some questions. Aman there from News 18 India. Yeah. Dr. Saab, we are used to having annual preventive health checkups. But after hearing you, do you think we should have more frequent health checkups, like a lipid profile, like other health checkups? And another thing I wanted to ask you, that if there is one thing that you would advise everybody to not do so that you don't get a heart attack, what should that one thing be? Okay. You should not expose yourself to tobacco actively or passively. That's a critical element. But the second element about your health checkups, I believe that health checkups are useful, but quite often they can be misleading if they do not give you an overall evaluation.
Risk is never usually predicated on a single risk factor. Of course, if you have got a very high blood pressure, 210 by 130, then of course you're in trouble because of that. But mostly it is moderate elevations of many risk factors which together create the situation of a heart attack. Slightly elevated blood glucose, slightly elevated LDL cholesterol, slightly depressed HDL cholesterol. These are the various things that combine. So it's important for you to recognize that you have to modify all of them in general. The second thing is, people with even a so-called seemingly normal cholesterol can get heart attacks because it is not just the ratio of HDL to LDL that matters. In LDL itself, there is a thing called small dense LDL, which is much more atherogenic than the big buoyant LDL. And people with diabetes, people with pre-diabetes, and many Indians, unfortunately, tend to have high levels of small dense LDL fraction. And that causes a problem. Now, this is not usually measured, even in your executive checkups. Now, how does one do it? Because it's expensive. So there is a ratio of triglyceride to HDL, which ideally you should be keeping it below 3:1, preferably below 2:1, but above 3:1 sort of spells danger. So these are some of the things that you must learn to recognize. Next. Okay, I believe we have one more question. Yes, the gentleman in the gray suit. Yeah, I'm Major General Sanjay Soi. Thank you so much for wonderful talk. Just a couple of things. In spite of maintaining good diet, at times, and like one doesn't have diabetic, one is not high blood pressure, but still gets a lot of very high cholesterol. Is there anything hereditary to do with it? Will the DNA test help in selecting the diet? Yes, actually, there is a hereditary component to many of these things, but the actual genetic component explains only less than 10%, all put together. However, in some group of people, familial hypercholesterolemia, there is a very clear-cut genetic predisposition, and there are a number of drugs that have been developed now which can significantly reduce that, the PCSK9 inhibitors, which are very useful, but they also act in others with elevated cholesterol, and more importantly, now they're showing that they are having a remarkable effect in reducing the risk of heart attacks. So they're being used quite effectively for diabetes and also for dyslipidemia now. They're being used in combination. So it's being, the PCSK9 particularly for familial hypercholesterolemia. Just hang on. We'll just hand over the mic to you, sir. Yeah. Doctor, I am Major Muhammad Ali Shah, and just not a question, just a statement that, you mentioned about earlier we would get paid to keep fit, now we pay to keep fit. Well, in the armed forces, they pay us to keep fit, sir. Wonderful. Thank you, sir. Well, I think we should motivate ourselves, but the message is that we must create conditions for pleasurable and safe physical activity in the community as well as in schools and, if possible, in work sites. That's important. We must not make it difficult for people to do physical activity. One more here. So please wait for the mic. I request all of you to please raise your hand so that we are able to pass the mic. Is it something to do with luck also? There's a lot of diabetes, heavy diabetes, people high on alcohol. Kushwant Singh died at 97. Biggest alcohol guy with diabetes. What a womanizer also. But the Iyengar yoga Are guru, you saying it's a protective factor? Okay. and Iyengar guru died at 88. So it has something to do with luck also, I think. There will always be some exceptions. I go to schools to talk to school children, and they say that my grandfather smoked. Somebody gets up and says, my grandfather smoked, but he lived up to the age of 80.
And this is the classical Winston Churchill example. Winston Churchill used to smoke like a chimney, but he'd lived up to 89 or whatever. So please think of traffic signals. You're not supposed to drive through a red light. If you rush through a red light, the likelihood of the probability of you getting an accident is much higher than if you stop at a red light. Of course, sometimes in Delhi, even if you stop at a red light, some car will come and bump you from behind. So some people who observe the rules also will get heart attacks, minority. Some people who do not observe the rules, early morning, hardly any traffic, you rush through a red light, you won't get an accident. Some people who do not observe rules because of combination of other factors do not get the heart attack. But they are also in a minority. For majority, the vast majority, the rules will apply. That if you have these risk behaviors and risk factors, you are likely to get much greater risk of heart attacks. But we do not know what protective factors Mr. Kushwant Singh had. Otherwise, maybe he was less stressed. Maybe he ate much healthier diet. We have no idea. So, socialization is also important. I mean, so social networks, we don't know. Anyway, but do not think that you can live like the few who are exceptions, because you may then succumb to the problem like the majority who are not exceptions. All right, we have time for one last question. I know all of you would like to ask a lot of questions from Dr. Reddy, but one last question. We just wait for the mic, sir. The mic is reaching you. Yes, please go ahead. Yeah, Dr. Reddy, thank you so much for this wonderful talk. Here this side, sir. As a father to a 4-year-old daughter who thinks that the purpose of heart is to miss Papa when he's not around, so what should I do to ensure that when she grows up, she has a healthy heart? So basically, women are better protected against heart attacks than men, up to menopause or even some years after menopause. That's because of various hormones, female sex hormones, and their HDL cholesterol levels are generally higher than that of men. So however, that protection disappears in women who smoke, women who take contraceptive pills regularly, and women who are diabetic, women who are obese. So best thing for you to tell her is to eat a good diet and be physically active, and certainly not marry a smoker. All right, Doctor, I'd now like to take a liberty to ask a question of you. Doctor, if you allow me. Dr. Reddy. Yes, ma'am. Okay, since you mentioned about women having less heart attacks, we've just had a recent example of an actor who's very, very fit, Sushmita Sen, and the fact that there's a lot of misinformation on social media, especially to do with the vaccines. They say people who are now vaccinated are getting early heart attacks. How does one cull all of that misinformation? And then of course, when you have celebrity cases like a Sushmita, like a Siddharth Shukla, how does one deal with it? Well, as far as vaccines are concerned, currently there is a fair amount of work going on in the UK as well as in the US to see whether some of the vaccines they have used have been responsible for heart problems. Some of them have been responsible for myocarditis, that is inflammation of the heart muscle, not so much heart attacks as such. Even there, people who have had COVID have had a greater occurrence of myocarditis than people who have received vaccines, but definitely myocarditis is known. But it's also known that the AstraZeneca vaccine and those kind of vaccines, the virus vector vaccines, also in some cases, again a small minority of cases, have resulted in venous and arterial thrombosis, so they can form clots. So some association is there, but in general, people who are vaccinated have much better health outcomes than people who are not vaccinated. Now, as far as some of the celebrities are concerned, I do not know the specifics of the lady you're mentioning. I think that's the lady you're hinting at. But I do not know what all factors contributed, whether smoking was a common feature, whether there was a lot of stress. We do not know what exactly are the reasons. But in general, as I said, women premenopausally, if they do not smoke, if they're not diabetic,
if they do not take oral contraceptive pills, they are much better protected than men. But after menopause, in about 5 to 10 years, that protection disappears. But also, if women are diabetic, even before menopause, that protection disappears because nothing reduces HDL cholesterol or the good cholesterol like smoking and diabetes. Okay, Dr. Reddy, I don't think they are willing to let go of you just yet. I believe there's one last question from the audience. I'd request, okay, Rakesh there has a question, yes. Sure. Hi, sir. So there, so many people are asking, and I also have a doubt, like we have been taking vaccines, we have taken 3 vaccines. So is that also one of the reasons to get heart attacks? Well, this is exactly what I was mentioning, that as far as the inactivated virus vaccine is concerned, there is absolutely no risk association with clotting. Whereas the virus vector vaccines, whether it is the AstraZeneca or the Johnson & Johnson vaccine, have been shown in a small number of cases to be associated with increased risk of clotting. And they may be associated with heart attacks. But there's a huge study going on in the US as well as in UK, putting all the data together to analyze whether this risk is high or not. But in general, we know that people who have had COVID during the immediate hospitalization phase or even after discharge are much more prone to blood clotting. And that's why they are advised, people who have been in intensive care or in hospital, for at least 6 weeks, they're advised anticoagulation after discharge. So the question is, are vaccines 100% safe? Probably not. Are they worse than getting COVID? Certainly not. All right, thank you so much, Doctor. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Reddy. Dr. Reddy, please request you to stay on the stage, and I'd like to also invite now Thank you so much, Dr. Reddy and Mr. Jyoti Kamal. That was a very, very engaging session to start day 2 of Rising India Real Heroes. Ladies and gentlemen, we'd like to once again thank Dr. Reddy for being with us and taking all your questions. So I hope that you enjoyed the session. Can we have more engagement like you were all engaged and ineptly listening to what Dr. Reddy was saying? Did you enjoy the session? In rapt attention, all of you. Okay, that's quite an engaging audience. I believe you had all your questions answered. If not, then you can actually go and get in touch with Dr. Reddy backstage. Hound him. Are they allowed to do that? Dr. Reddy, I'll take his reactions slightly later, but thank you so much for being such an engaging audience. And it would be really, really lovely if we have this kind of engagement flowing in through the day, because we're talking about real heroes like Dr. Srinath Reddy, who we've just heard from. That was such a super enriching session and something that really, really matters to each one of us. Now, ladies and gentlemen, our next session is with a leader who has held a range of important jobs, from the Chief Minister of Uttar Pradesh to the BJP President, to the Union Home Minister, and now India's Defense Minister. He holds the key to India's safety. His experience and administrative skills have ensured that millions of Indians sleep easy at night, and they are able to be very, very secure in the knowledge that terrorism is being fought and our borders are protected with a blend of intelligence and determination. On that note, I'd like to welcome onto the stage Sri Rajnath Singh, Minister of Defense, to deliver a very special
किसी की तलाश कर रहा था। मैं समझ रहा था कि राहुल जी बैठेंगे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जी जोशी और उनकी टीम के अन्य सभी सदस्य और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं टीवी 18 नेटवर्क के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित किया है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा मैंने महसूस किया है कि टीवी 18 यह नेटवर्क जनता में जिस तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाई है, दर्शकों को अपने से जोड़ा है और दर्शकों की आवाज बनकर वो उभरा है, उसके लिए टीवी 18 नेटवर्क को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। आज आपके माध्यम से मैं बड़ी संख्या में देश की जनता से रूबरू हो रहा हूं और इसके लिए भी मैं टीवी 18 नेटवर्क को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। साथियों, राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में राइजिंग इंडिया दरअसल है क्या, इस पर मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अलग अलग प्रकार के लोग इंडिया राइजिंग को अपने नज़रिए से अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट भारत की लगातार बढ़ती और समृद्धि होती हुई इकॉनमी को इंडिया राइजिंग के रूप में देखते हैं, तो कुछ समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट भारत की बेहतर होती हुई सामाजिक स्थिति को भी इंडिया राइजिंग के रूप में वो देखते हैं। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता को राइजिंग इंडिया का नाम देते हैं। हालांकि कुछ लोग इसके उलट भी बहुत ही सक्रिय हैं, जिन्हें भारत से लोकतंत्र समाप्त होता हुआ दिखाई देने लगा है, पर ऐसे लोग बहुत ही गिने चुने लोग हैं। साथियों, इस तरह मैं बिंदुवार आप लोगों के सामने एक एक करके इन सभी एस्पेक्ट्स पर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इकॉनमी की। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि पिछले 8-9 वर्षों में हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप सभी मॉर्गन स्टैनले के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे और आए दिन उनकी किसी न किसी रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं भी होती रहती हैं। इसी मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल का मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जल्दी टूट जाने वाला, जल्दी बिखर जाने वाला होता है। यानी दुनिया की ऐसी इकोनॉमी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, उनके लिए यह टर्म फ्रेजाइल का यूज किया गया और उनमें एक नाम हमारे देश भारत का भी था। यानी 8-9 साल पहले भारत की इकोनॉमी कहाँ थी, किस कगार पर थी, इसका सहज रूप से आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरीके से परिवर्तन होता है, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आती है और वहीं से हमारी इकॉनमी की सूरत बदलती हुई दिखाई देने लगती है। दुनिया में आई मंदी की संभावनाओं से लेकर कोविड तक की समस्याओं से जूझते, गिरते, संभलते भारत देश की इकॉनमी आज ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां यह और देशों के लिए एक इंस्पिरेशन का कारण बन सकती है। आज हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने के साथ साथ दुनिया की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमीज में से एक बन चुका है। यानी इन वर्षों में हमारे देश ने फ्रेजाइल 5 से निकलकर फेबुलस 5 में लाकर अपने को खड़ा कर दिया है। इसी मॉर्गन स्टैनले ने कुछ समय पहले एक और रिपोर्ट की है, जिसे जरूर आप लोगों ने देखा होगा। अपनी इस रिपोर्ट में इसी मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि 2027 आते आते
इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अमृतकाल का समापन मना रहे होंगे, यानी आज़ादी प्राप्त होने के 100 वर्ष जब पूरे हो रहे होंगे, तो हमारा भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, बीते फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, इनका जितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में पहले कोई ये कल्पना भी नहीं करता था। कुछ समय पहले तक भारत मोबाइल फोन्स के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हुआ करता था। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का एक बड़ा देश बन चुका है। सिर्फ 4 महीने में अकेले एप्पल कंपनी ने $1 अरब का एक्सपोर्ट भारत से दूसरे देशों में किया है। आज भारत की गिनती उन चुनिंदा देशों में होती है जहां 5G मोबाइल कनेक्टिविटी है। 5G रोल आउट ही हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 6G की तैयारी भी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा उस कार्यक्रम को। दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस आज किसी देश के पास है, सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस यदि किसी के पास है तो हमारे भारत के पास है। 2014 में जहां देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी केवल 20% थी, वह आज बढ़कर 80% पहुंच गई है। भारत में होने वाले एक्सपोर्ट एक समय $300 बिलियन पर ही ठहर गए थे, पर आज हमारे देश में होने वाला एक्सपोर्ट कल ही आपने वो फिगर देखी होगी, $750 बिलियन तक ये पहुंच चुका है। साथियों, गत वर्ष भारत ने $83.57 बिलियन का अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिजनेस हाउस किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो बहुत सोच समझ कर करता है और बहुत ही जांच परख कर करता है, और वह देश की संभावनाओं और अवसरों को जांचने परखने के बाद ही वह इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे में रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो हमारी इकोनॉमी के लिए निश्चित ही एक पॉजिटिव सिग्नल है। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अब वह भारत का समय आ गया है। आगे आने वाले समय में हमारा देश भारत दुनिया की मेजर इकोनॉमिक पावर में से एक नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत दिन हो गया यह कहते कहते कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आज मैं आप लोगों के सामने यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि बहनों भाइयों, अब हम लोगों का टाइम आ गया है, यानी भारत का समय अब आ गया है। यह है राइजिंग इंडिया मेरे साथियों, यह है राइजिंग इंडिया। जाहिर है इसके पीछे सरकार द्वारा सही समय पर उठाए गए सही कदम हैं, जिनकी चर्चा मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष करना चाहूँगा। साथियों, सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड लेवल पर अनेक कार्य किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सरकार ने देश में बिजनेस के लिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी वो इंश्योर की है, और 2014 में अनेक बैंक एनपीए के बोझ के तले दबे हुए थे, वे नए लोन देने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी समस्याओं से भी निपटने के लिए सरकार ने कई मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। हमने मजबूती से कदम उठाकर कुछ बैंकों को आपस में मर्ज करने का भी काम किया है। कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए हम उन्हें फिर से उठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके भी उन्हें रिवाइव करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। बैंक्स जो अब तक कहीं एनपीए या फिर इसी तरह के अन्य कारणों से नुकसान में चल रहे थे, हमने उनका पुनरुद्धार किया है और आज बैंक्स मार्केट में भली भांति लोन्स उपलब्ध कराने की स्थिति में खड़े हो गए। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्रेडिट ऑफटेक में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आज देश में एक वाइब्रेंट डिजिटल इकोनॉमी तैयार हो चुकी है।
इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। यूपीआई की सफलता ने पूरी दुनिया को इस समय आश्चर्य में डाल दिया है। आज भारत पूरी दुनिया का 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट कहीं हो रहा है तो आज हमारे और आपके भारत में हो रहा है। पिछले महीने पर डे 36 करोड़ यूपीआई पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं। साथियों, इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हमने भरोसा दिलाया। हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई, ट्रेडिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया और ट्रेडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी साथ ही बनाने का काम किया है। अब गांव और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी एक मोबाइल लेकर सभी रिस्क को समझते हुए अपना पैसा मार्केट में लगाने को सदैव तैयार रहते हैं। इस तरह मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के भारी संख्या में आने से मार्केट की डेप्थ और डेप्थ के साथ साथ रेजिलियंस यह दोनों बढ़ी है। इससे हमारे बिजनेस को कैपिटल की इजी अवेलेबिलिटी वर्तमान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। साथियों, इकॉनमी को सुदृढ़ करने में मार्केट एक्सेस की निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप लोग अवगत होंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज को अपने देश में मार्केट उपलब्ध कराना हमारी आत्मनिर्भरता के कमिटमेंट का यह एक हिस्सा है और हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट को अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही साथ हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बाहर देशों में भी मार्केट एक्सेस दिलाने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं ताकि वे बाहर भी मार्केट कैप्चर कर सकें। साथियों, हमारा देश का डिफेंस सेक्टर जो किसी समय अधिकांशतः इंपोर्ट पर निर्भर रहा करता था, अब अपने मजबूती के साथ अपने पैरों पर तेजी के साथ खड़ा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस सेक्टर में हमने कुछ ऐसे रिफॉर्म किए हैं जो अब तक कभी सोचे भी नहीं गए हैं। हमने सर्विस और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसमें शामिल आइटम्स का प्रोडक्शन अब समयबद्ध तरीके से कहीं होगा तो हमारे और आपके देश भारत में होगा। यह हम लोगों ने फैसला किया है। हमारी सेनाओं द्वारा अब तक की इस तरह की 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है। मोर देन 400 आइटम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि निर्धारित समय के बाद, यानी कुछ 1 वर्ष के बाद, कुछ 2 वर्ष के बाद, कुछ 3 वर्ष के बाद, यह सारे आइटम्स दुनिया के दूसरे देशों से यह इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि बनेंगे तो हमारे देश में भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। इसी तरह डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी 3 लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 3700 से भी अधिक ऐसे आइटम्स हैं जो हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने के काम आते हैं। इनके भी इंडिजिनाइजेशन पर हमने बल दिया है। साथियों, हमने डिफेंस सेक्टर से जुड़े डोमेस्टिक वेंडर्स को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि हमारी सेनाओं के लिए गोले बारूद अब स्वदेशी कंपनियों द्वारा ही खरीदे जाएंगे। इसके लिए डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन का एक निश्चित हिस्सा हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व भी कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए यह हिस्सा अब 75% कर दिया गया है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बनता है। और आपको मुझे जानकारी देते हुए यह बेहद खुशी हो रही है कि हमने इसमें 25% कैपिटल एक्विजिशन का परसेंटेज, यह शेयर केवल प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए निर्धारित कर दिया है। इसी प्रकार के अनेक स्टेप्स लिए गए हैं, जिनके परिणाम अब हमारे सामने आने प्रारंभ हो गए हैं। हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम न केवल अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी हथियार और साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, कुछ पिछले समय में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है और आज से 7-8 साल पहले ये एक्सपोर्ट, जहां कुल जमा 1000 करोड़ रुपए भी नहीं होता था, अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ रुपया था, अब वह बढ़कर मोर देन 14 to 15,000 करोड़ पहुंच गया है।
हमारा टारगेट है कि 26 समाप्त होते होते हमारा यह एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच जाए। साथियों, स्टार्टअप के लिए हमारे देश में वेंचर कैपिटल फंडिंग का कल्चर भी डेवलप हुआ है, जो अर्ली स्टेज पर उनकी हैंड होल्डिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप बेस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम की सफलता इस बात से देख सकते हैं और देश में कि यूनिकॉर्न की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। हमारे सिस्टम में अनेक ऐसे तरह के रूल्स थे जिनकी वजह से साथियों मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर अनावश्यक बर्डन हुआ करता था, और सामान्यतः यह शिकायत हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के द्वारा होती थी। जाने कितने रूल्स और रेगुलेशंस अभी मौजूद थे जिनका रिलेवेंस खत्म हो चुका था। ऐसे निरर्थक और इलॉजिकल रूल्स को समाप्त करना भी वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए प्रमुख रिफॉर्म्स में से एक है। बिजनेसेस की आसानी के लिए हमने प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जैसे भी रिफॉर्म्स किए हैं, और इसके साथ साथ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर में रेड टेपिज्म को कम करना भी इसी तरह के हमारे कदम रहे हैं। साथियों, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, और राइजिंग इंडिया का अर्थ यही है कि हमारी इकोनॉमी के सभी इंजन फायर कर रहे हैं और हम उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, यह बातें जो कुछ आपके सामने हमने रखी हैं, जो हमारे इकॉनमी को मजबूत करने से संबंधित थी, वही बातें आपके सामने रखी हैं। अब मैं देश के सामाजिक विकास से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के सामने यहाँ रखना चाहूँगा। सामाजिक स्तर पर भी देश में पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव हुआ है वह रिमार्केबल है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद तक भी हमारा देश सामाजिक रूप से उतना सशक्त नहीं हो सका जितना कि इसे होना चाहिए था। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर एक दो जो प्रमुख कारण हैं उस पर मैं अपनी बात आप सबके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। उदाहरण के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए समानता सबसे पहली ज़रूरत होती है। वह समानता आर्थिक हो सकती है, वह समानता राजनीतिक हो सकती है, वह समानता शैक्षिक हो सकती है, धार्मिक और सांस्कृतिक भी हो सकती है। इन सब पहलुओं पर हमने ध्यान दिया है और यह इंश्योर करने का प्रयास किया है कि समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों और सभी प्रकार के कार्यों में सभी लोगों का उचित प्रतिनिधित्व भी हो। और साथियों, अब तक हमने अपने देश की जो राजनीति देखी है उसमें खुलेआम जातियों के नाम पर वोट बैंक बनाए जाते थे। धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण को माइनॉरिटी राइट्स कहा जाता था, पर हमने इस कल्चर को पूरी तरह से बदलते हुए सामाजिक बदलाव के पैमाने को केंद्र में रखा है। और जब मैं यहाँ सामाजिक बदलाव की बात आप सबके सामने कह रहा हूँ तो उससे मेरा अर्थ समाज में रह रहे सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों से है। उदाहरण के लिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा है। दुनिया के बड़े देश इन कुरीतियों से कब के मुक्त हो चुके हैं और इनमें इस्लामिक देश भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, पर हमारे यहाँ ऐसे मुद्दे सामने रखकर न केवल राजनीति की जाती थी बल्कि धर्म के नाम पर महिलाओं को अच्छी तरह से ठगा भी जाता था। समानता, स्वतंत्रता की बात करने वाले बड़े बड़े सो कॉल्ड थिंकर्स इस मुद्दे पर आकर चुप्पी साध लेते थे। क्या मुस्लिम महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता उनकी गरिमा के साथ नहीं जुड़ी है? क्या वह सामान्य महिलाओं से अलग हैं जो इनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था? हमने इन सब से ऊपर उठते हुए उनकी गरिमा, उनकी समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का काम किया है और दिखाया है हमने कि सामाजिक विकास के लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। आगे भी ऐसा कोई मुद्दा हमारे सामने आता है तो उस पर भी हम मानवीय और संवैधानिक दृष्टि से कार्य करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, हमने हमेशा इस बात को माना है कि नारी किसी भी मामले में अपने पुरुष साथियों से कम नहीं है।
सोचने समझने से लेकर ग्राउंड लेवल पर काम करने तक में वे उनकी बराबरी कर सकती हैं, बल्कि कई कामों में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उससे वह पुरुषों से भी एक कदम आगे साबित हो रही हैं। बावजूद इसके नेशन बिल्डिंग में जब नारी पुरुष समानता की बात आती है तो हमारी बेटियां कहीं पीछे छूट जाती हैं। पीछे रह जाने का मतलब यह नहीं है कि वह पीछे हैं, बल्कि पीछे रह जाने का मतलब यह है कि उन्हें अवसर उपलब्ध कराने में हमने अब तक कहीं न कहीं हिचकिचाहट यानी हेजिटेशन अपनी दिखाई है। इसलिए सत्ता में आने के बाद शौचालय से लेकर संसद तक पहुंचने वाले रास्तों का निर्माण महिलाओं के लिए किया है। आप सभी भद्रजन हैं, सज्जन लोग यहां पर बैठे हैं। आपको मालूम होगा कि कई बार शौचालय जैसे मुद्दों पर बात करना तो लोगों को अशोभनीय लगने लगता था। उन्हें लगता था कि भला यह कोई बात है कहने की या अपने मेजर अचीवमेंट्स में इसको काउंट करने की। और पर यह केवल उन लोगों को ही लगता था जिनको शौच के लिए बाहर जाने के लिए सूरज ढलने तक का इंतजार नहीं करना पड़ा है। साथियों, खासकर महिलाओं के संदर्भ में मैं बात करूं तो सवेरे सनराइज के बाद जिस देश में बाहर निकलना बहुत ही कठिन काम हो, उस देश की राइजिंग की कल्पना कहां की जा सकती है। देश के संसद में महिलाओं को हक देने की बात उठी, पर शौचालय ने उनके हक की बात देश में कभी नहीं की गई। सन 2014 के बाद देश में बड़ी संख्या में महिलाओं ने यह जाना कि इतनी मामूली और बेसिक सी चीज उनके पास होनी चाहिए। हमारे देश के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में यह किसी क्रांति से कम नहीं था। साथियों, इस प्रकार देश की बेटियों की शिक्षा के लिए भी हमने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आज एक नारा न होकर यह जन आंदोलन बन चुका है। आप कभी रास्ते से गुजरते हुए ध्यान दें तो ये पाएंगे कि ट्रक वाले और टेम्पो वाले अपनी गाड़ी के पीछे इस तरह के स्लोगन्स बड़ी शान के साथ लिखवा कर चलते हैं। यानी यह स्लोगन्स केवल अब यह स्लोगन नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की चेतना का यह एक अंग बन गया है, एक हिस्सा बन गया है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के तौर पर मैं कहूं तो आज महिलाएं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर उन्हें और अधिक और सशक्त कर रही हैं। फाइटर पायलट के रूप में लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। अभी हाल ही में मैंने आर्टिलरी में वीमेन इंडक्शन को मंजूरी दी है, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले दिया है। इस तरह आर्म्ड फोर्सेस में उनकी भागीदारी के साथ वीमेन एम्पावरमेंट और आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की दिशा में हम एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोसाइटी राइजिंग का यह एक मैं समझता हूं महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरह भ्रष्टाचार पर लगाम और स्वच्छता जैसे विषय पर अब लोगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक बन गए हैं। इन विषयों को लोगों ने अब आत्मसात कर लिया है। यह निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक सामाजिक बदलाव है। इस रूप में मैं इसे देखता हूं। साथियों, हमारा उभरता भारत हमारी बदलती राजनीति से भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। आज देश में कोई काम करने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और मैं कह सकता हूं इस इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के पास एक संकल्प शक्ति है। और उसका परिणाम सबसे पहले हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। आज भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चीन का स्टैंड ऑफ हो या पाकिस्तान की कोई करतूत, हमारी सेनाएं खुलकर उसका जवाब दे रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, और यह संदेश स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को चला गया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत अंदर भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उनकी धरती पर भी जाकर भारत मार सकता है। यह संदेश पूरी तरह से साफ है, और मैं मानता हूं कि यह स्ट्रांग विल पावर का ही यह परिणाम है कि जम्मू और कश्मीर की धारा 370 का समाप्त करना, जम्मू और कश्मीर के एकीकरण की सालों पहले एक अलग जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जलाई थी, पहले जो यह अलग उन्होंने जलाई थी, अब अपनी पूरी भव्यता के साथ वह अलग अब प्रज्वलित हो रही है।
इसके बाद वहां स्थिति बड़ी तेजी से सामान्य हो रही है धारा 370 समाप्त करने के बाद। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। यात्रा निकल गई कश्मीर से, कोई कठिनाई नहीं हुई। लाल चौक पर कभी भाजपा नेताओं ने संगीनों के साए में तिरंगा लहराया था, और उस समय आज के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में उस समय झंडा लहराने में वह भी शामिल थे। और आज बिना खौफ, बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के अब जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में जाकर अपना भारत का तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। इसी तरह 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसी के विस्तार में आज हम अपनी जमीन पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स, तोप, टैंक और गोले बारूद तैयार कर रहे हैं। बिना दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के मित्रों यह किसी भी सूरत में संभव नहीं था। साथियों, आप सब भी जानते हैं देश में अनेक ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर पिछली सरकारों का ध्यान जितना जाना चाहिए वह नहीं गया। आज हम उसे प्रगति की राह पर ला रहे हैं। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन अपनी खूबसूरती और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद लंबे समय तक विकास की धारा से यह कटा हुआ था। कभी सिक्योरिटी इश्यूज के नाम पर, एक्टिविटी न होने की वजह से आज़ादी के दशकों बाद भी यह क्षेत्र विकास तो दूर, अपनी मूलभूत जरूरतों तक से भी यह लगातार वंचित रहा है। इसके कारण यहाँ की इकॉनमी भी काफ़ी प्रभावित हुई है, एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है इकॉनमी के ऊपर। पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तो दूर था ही, मगर यहाँ बैठे हुए लोगों के दिलों से भी वह दूर था। मगर हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली और दिल दोनों के करीब लाकर आज खड़ा कर दिया है। साथियों, आज हर महीने केंद्रीय मंत्रियों का दौरा नॉर्थ ईस्ट में होता है। स्वयं प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना दौरा नहीं किया है जितना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। साथियों, आज नॉर्थ ईस्ट में अभूतपूर्व शांति है, और इसका परिणाम यह हुआ है कि अप्सपा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल